Hello, dear students. Today we are going to discuss two important poetic forms that are dramatic monologue and free verse. As you know that poetry is written in various forms like sonnet, ode, lyric, dramatic monologue, free verse, etc. So, dramatic monologue is also one of those poetic forms which are used while writing poetry. So today let us discuss about dramatic monologue. Dramatic monologue is a kind of lyric poem in which there is a single speaker who is not the poet. So here it is clear that dramatic monologue is a kind of poetry where there is a single speaker who speaks about himself. He utters the speech, he says something which makes up the whole of the poem in a specific situation at a critical moment. This person or speaker addresses and interacts with the silent interlocutor whose role and reactions are inferred from the speaker's words. We get to know about dramatic monologue that there is a single speaker who speaks to his audiences, and the audience is silent listener, and both the listener and the speaker are shown in a dramatic way, and the speaker or the person addresses that silent listener, and while addressing that silent listener he reveals his own character before the reader or the audience. In the course of his speech, the speaker reveals his temperament and character to the reader. So here it is clear that the speaker of the dramatic monologue reveals his own temperament, his character before the reader. Dramatic monologue is a genre that was perfected by Robert Browning. Robert Browning was a great Victorian poet who was the master of this kind of poetic form, dramatic monologue, and he developed and perfected this genre. Self revelation is the hallmark of a dramatic monologue. It is the most beautiful characteristic feature of this kind of poetry, where the self revelation of the speaker is the hallmark of dramatic monologue. For example, the Italian Renaissance Duke, the Italian Renaissance Duke in my Last Dutchess, who is addressing the envoy of a prospective father in law, confesses to the murder of the wife he is going to replace. So, in this poem, uh, My Last Duchess, it has also been written by Robert Browning, in which the speaker is the uh, Italian Renaissance Duke, and who is addressing some envoy who has come with the marriage proposal, and he confesses to that envoy about the murder of his late wife, whom he has killed. Uh, and he is hoping to replace the late wife with the new one. The Duke begins by engaging the reader's attention that ends by condemning himself. And in the course of action, द ड्यूक जो है वो उनको जो उनका इन्वॉय आता है उसको अपनी जो टॉकिंग होती है उसमें इंगेज कर लेता है, उसी से शुरुआत करता है, और जो रीडर की अटेंशन जो है अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करता है उसको, और अपने आप को ही जो है कंडेमिंग फॉर्म में अपनी जो बात है उसको ख़त्म करता है. ड्रामेटिक मोनोलॉग नीड्स टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ड्रामेटिक लिरिक. So dramatic lyric is another kind of form which is to be distinguished from dramatic monologue, which is also a monologue uttered in an identifiable situation at a dramatic moment. So there is a slight difference between dramatic monologue and dramatic lyric, where in dramatic lyric a monologue is uttered in an identifiable situation at a dramatic moment, and the focus of interest in a dramatic lyric is on the speaker's elaborate argument with the reader on the character inadvertently revealing himself or herself in the course of arguing. So,
This is about dramatic lyric and dramatic monologue. Uh, then we come on the point free verse. Free verse is an open form of poetry. It is it does not have a regular meter or line length. So as we know that poetry is written according to some certain meter, but there is a form of poetry in the form of free verse, which is the open form of poetry. It does not follow any kind of regular meter or line length. It follows the rhythm of natural speech. जैसे हमारे जो जो नेचुरल स्पीच में हमारे बोलने में जो रिदम होता है, सिर्फ उसी को जो है फ्री वर्स में फॉलो किया जाता है. सच पोइट्री इज ऑर्गेनाइज्ड टू cadences of speech and image patterns rather than according to a regular metrical scheme. तो इस प्रकार की पोइट्री में जो है मेट्रिकल स्कीम, कोई रेगुलर मेट्रिकल स्केल या पैटर्न को फॉलो करने की बजाय जो है जो स्पीच और जो इमेज होती है उसका पैटर्न होता है उसी पर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है. A regular pattern of sound और rhythm may emerge in free verse lines. एक रेगुलर पैटर्न जो है वो साउंड का और रिदम का जो है ये फ्री वर्स की लाइंस में भी आ सकता है, बट द पोइट डज नॉट फॉलो एनी रेगुलर मीट्रिकल स्कीम. लेकिन जो है पोइट जो है इसमें कोई रेगुलर मीट्रिकल स्कीम को फॉलो नहीं करता. इट डस्ट रेकरेंट यूनिट्स ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस्ड सिलेबल्स, कि जैसे स्ट्रॉन्ग सिलेबल्स हैं या वीक सिलेबल्स हैं, किस प्रकार के यूनिट का प्रयोग किया गया, हीरोइक कपलेट है या कोई पेंटामीटर लाइंस हैं, इन तरह की चीज़ों को जो है इंटेंशनली इसमें जो है पोइट नहीं रखता है. इट्स राइम्स आर बेस्ड ऑन पैटर्न एलिमेंट्स such as sounds, words, phrases, sentences and paragraphs rather than on the traditional prosodic यूनिट्स ऑफ मेट्रिकल फीट पर लाइन. इस प्रकार की पोइट्री में जो है वो उसका जो पैटर्न्स होता है, उसकी राइम्स होती है, उस वो जो है उसकी ध्वनि, उसके शब्द, उसके फ्रेजेस, उसके सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स, उनके ऊपर बेस होता है, ना कि कोई जो पारंपरिक जो हमारा जो यूनिट्स होती हैं, मेट्रिकल फीट होते हैं जो पर लाइन में फॉलो किए जाते हैं, उनको फॉलो इसमें नहीं किया जाता. फ्री वर्स दस एलिमिनेट्स मच ऑफ द आर्टिफिशियलिटी ऑफ पोइटिक एक्सप्रेशन. तो पोइट्रिक फॉर्म जो फ्री वर्स है ये जो है क्या करती है कि जो आर्टिफिशियलिटी ऑफ पोइटिक एक्सप्रेशन है, कृत्रिमता जो उसमें आ जाती है उसको एलिमिनेट करती है. इट्स फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन शोज द मॉडर्न ईडियम एंड कैजुअल टोटलिटी ऑफ लैंग्वेज, टोनलिटी ऑफ लैंग्वेज, कि इसको जो फ्लेक्सिबल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है कि इसमें हम ऊपर नीचे आगे पीछे जो है जिस हिसाब से हम चाहें अपने स्पीच को, अपने साउंड को, अपने वर्ड्स को रख सकते हैं. और जो मॉडर्न ईडियम है उसको जो है ये ज़्यादा शूट करती है. और जो है कैजुअल टोन जो है कैजुअल लैंग्वेज की उसको भी ये फॉलो करता है. Although the term is loosely applied to the poetry of Matthew Arnold and Walt Whitman, who are experimented with departures from regular meter. तो यद्यपि जो है ये फ्री वर्स टर्म जो है वो मैथ्यू आर्नल्ड एक पोइट हैं, उनकी पोइट्री के ऊपर लागू किया जाता है, या एक अनदर अमेरिकन पोइट है वॉल्ट विटमैन, उनकी पोइट्री जो उन्होंने इस तरह के रेगुलर मीटर से अलग होके एक्सपेरिमेंट के वे में जो है लिखा, उनकी पोइट्री पे लागू होता है. इट वाज ओरिजिनली ए लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ अ वर्स लिब्रा. तो जो है द नेम ऑफ द मूवमेंट दैट ओरिजिनेटेड इन फ्रांस इन द 1880s, कि फ्रांस में 1880 में कोई एक जो है वर्स लिब्रा नाम का जो एक मूवमेंट है वो हुआ था. तो उससे जो है इसका जो वर्स लिब्रा है इसका लिटरल ट्रांसलेशन जो है ये फ्री वर्स होता है. फ्री वर्स बिकेम करंट इन इंग्लिश पोइटिक्स इन द अर्ली 20th सेंचुरी. और जो बात की जाए इंग्लिश पोइट्री में तो जो प्रारंभिक 20वीं शताब्दी थी उसमें ये जो है ज़्यादा अपने फॉर्म में जो है यूज़ किया जाने लगा था. Poets such as William Carlos Williams, T.S. Eliot and Ezra Pound have written their lyric poetry in free verse. तो जो T.S. Eliot है, Ezra Pound है, Carlos William है, इन सब ने जो है अपनी poems जो हैं free verse में लिखी हैं. So here we end our today's lecture, friends and students. This was about dramatic, monologue and free verse, two poetic forms according to which poetry is written. And in our next YouTube video we shall discuss about some poetic devices which are also used while writing in poetry. Thank you.